Very good morning, 8th class. Today we will cover DG for your history book chapter number 6, that is colonialism and the city. दिल्ली के बारे में हमने रीड आउट किया था, दिल्ली की हिस्ट्री को समझा था। कॉलोनिज्म आने की वजह से यानी कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने की वजह से दिल्ली की जो हिस्ट्री थी, दिल्ली का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किस तरीके से चेंज हुआ था, वो सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में स्टडी की थी, राइट। तो आज इसकी डीजी कवर करेंगे हम। ट्रेसिंग द emergence ऑफ दिल्ली until 19th century। 19th century तक क्या हिस्ट्री थी दिल्ली की, पहले हम वो देखते हैं। Arjuna and Krishna had burnt the Khandava forest to build a city here. Yudhishthira had named it Indraprastha. Whether Indraprastha was a myth or not, in the late 12th century, Prithviraj Chauhan came to rule the region. Then the sultans came and made it their capital. Later, the Mughals made it the seat of their empire. When the British came, they transformed it back into a provincial town. Finally, when India became independent, it was the natural choice for the country's capital. That is Delhi, the city that was made the capital 14 times. Though it did not have any typical features of a capital city, what do you think made Delhi such a popular choice for a capital city? After the Epic Age, Delhi shot back into prominence as a commercial center only in the 12th century, when the Tomara Rajputs made it their capital city. Rich Rajasthani and Rajput merchants came to live here, bringing with them a lot of wealth. They constructed beautiful temples and palatial houses. They even introduced coinage of their own called Delhiwal. Then came Prithviraj Chauhan, who ruled Delhi and fortified the city of Kila Rai Pittora with high-rise walls and ramparts. But for whom was this fortification? Invaders or plunderers? इस दिल्ली की हिस्ट्री को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इसको तो हम फटाफट ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं दिल्ली की हिस्ट्री को अप टिल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। Delhi's commercial growth was attracting both invaders and plunderers, especially Mahmud of Ghazni. From Ghazni to Ghori to the Mamluks, Delhi's popularity was spreading among the invaders from the far north. Finally, in 1206 AD, the Mamluks, slaves who had become rulers, invaded Delhi, established their rule, and made it their main garrison town. The Qutub Minar was built by them. किसने बनाया था? ममलूक्स ने बनाया था, ठीक है, याद रखना अपना। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? ममलूक्स की जो डायनेस्टी थी उन लोगों ने। After the Mamluks, the Khiljis became the sultans. They cleared the forests, built new fortresses, protected Delhi's trade routes, and promoted regional trade. The Mongols were the Khiljis' main threat. Alauddin Khilji
built the Siri fort in 1303 in a ravine north of Qutub Minar. जो सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम आपने देखा होगा, उस सिरी फोर्ट को किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। Later, when Ghiyasuddin Tughlaq became the Delhi Sultan, he wanted protection against the heavy attacks of the Mongols. He commissioned the Tughlaqabad fort as protection from Mongol attacks. Towards the end of the 14th century, the Tughlaqs were losing their control due to succession battles. So, when Timur invaded Delhi in 1398, he easily sacked, destroyed, and ruined the city. But before leaving, he chose the Sayids as the next sultans of Delhi. Why do you think Delhi was under so much attack from the Mongols and other invaders from the north? किस लिए था? इतने इम्पोर्टेंट सिटी क्यों बनती जा रही थी? दिल्ली की सब लोग जो है इन्वेड करना चाहते थे, अलग अलग टाइम पे मंगोल्स ने भी इन्वेड किया और दूसरे जो इन्वेडर्स थे वो भी बार बार जो है दिल्ली को अटैक कर रहे थे और यहाँ पे जो है इन्वेजन कर रहे थे। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि दिल्ली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी थी। पहली बात तो ये कैपिटल थी, दूसरा ये एक इजी रूट देती थी पूरे इंडिया में एक्सेस करने के लिए, और तीसरी बात ये थी कि दिल्ली की जो वेल्थ थी, ठीक है, वो भी इन इन्वेडर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। Delhi was strategically positioned with respect to the northwest, from where the Mongols and other invaders were entering India. Also, invaders were attracted for its wealth and grandeur. The next important phase in Delhi's history was the rulership of Ibrahim Lodi. Babur attacked and defeated the Sultan's army. Babur went on to establish Mughal rule in Delhi and India. The Mughal era was a golden phase for Delhi, except for two brief periods. जो बाबर था उसने मुगल के रूल की जो है एस्टेब्लिशमेंट की थी इंडिया में। मुगल रूल जो है स्टार्ट हुआ था जब बाबर ने जो है इन्वेड किया था और ये लोग आके यहाँ पे रूल करने लगे थे। The first was in 1540 when Humayun was on the run. And Sher Shah Suri made Delhi his Sher Shahi or Shergarh. But in 1555, Humayun recaptured Delhi. The second period began in 1569, when Akbar shifted his capital out of Delhi to Fatehpur Sikri. This period ended in 1638, when Shah Jahan shifted the capital back to Delhi. Among the Mughal emperors, Shah Jahan contributed the most to Delhi's landscape. Can you name some of the monuments that were constructed during Shah Jahan's reign? शाहजहां ने क्या कहा था? बहुत सारे जो है मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट किया था। इसने कई अलग अलग जो है बिल्डिंग्स बनवाई थी शाहजहां ने, ठीक है, अपने टाइम में। तो इस समय में क्या था, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स का हो रहा था। जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ये सब दिल्ली में इसने बनवाया था। After the decline of the Mughal Empire, Delhi again lost its status as the power center. The British maintained Calcutta as their nodal city and reduced Delhi to a provincial town. Delhi remained so till क्या करा इन्होंने? कैपिटल अपनी बनाया कैलकाटा को, ठीक है। इसकी और दिल्ली जो है एक सिंपल सा एक टाउन बन के रह गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को यहाँ से इजी एक्सेस रहता था, क्योंकि यहाँ से इनका जो है पोर्ट रूट था, यानी कि सी रूट यहाँ था। तो कैलकाटा क्या था, एक पोर्ट सिटी थी, तो कैलकाटा को ही इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था और दिल्ली को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। 1947, when India became independent and Delhi became independent India's capital.
अब देखेंगे द न्यू कैपिटल दिल्ली आजादी के बाद. Before 1857, the British and wealthier Indians lived in harmony in the walled city of Delhi. The British led. चैप्टर में हमने रीड आउट किया था वॉल्ड सिटी क्या थी, जहाँ पे कुछ अमीर इंडियंस रहते थे और ब्रिटिशर्स रहा करते थे. ठीक है, दोनों जो है इस वॉल्ड सिटी ऑफ दिल्ली में रहा करते थे. To enjoy Urdu and Persian culture and poetry. The establishment of the Delhi College in 1792 led to a great intellectual flowering in the sciences and humanities, largely in the Urdu language. ठीक है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना होने के बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फ्लो होने लगा था, यानी कि पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा आने लगे थे, स्पेशली जो उर्दू लैंग्वेज को जानने वाले थे. तो इन सब चीज़ों की जो है यहाँ पे फिर एनहांसमेंट हुआ था. Many refer to this period from 1830 to 1857 as the period of the Delhi Renaissance. But Indo-British relations changed after 1857. So what happened in 1857 to trigger this change? आपको पता है Recall an important historical event of this period. कौन सी थी वो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट? आपको पता है 1857 में क्या हुआ था? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था. क्या हुआ था? रिवोल्ट हुआ था बहुत ही लार्ज स्केल पे, और वो एक हिस्टोरिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट थी, जिसके बाद से ये सारा जो सिस्टम था, जो जिससे कि इंडो ब्रिटिश जो रिलेशन था वो चेंज हो गया था. Yes, it was the revolt of 1857. In this session, we will learn how the city of Delhi underwent a transformation after the revolt. 1857 की क्रांति के बाद क्या जो है दिल्ली का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पूरी तरीके से दिल्ली किस तरीके से बदल गई, क्योंकि अभी तक ब्रिटिशर्स क्या थे, इसको एज एन इम्पॉर्टेंट सिटी कंसीडर नहीं करते थे. ठीक है, क्योंकि कलकत्ता पे उनका मेन फोकस था. लेकिन जब उनको पता लगता है कि इस तरीके से जो है दिल्ली की वजह से, दिल्ली में जो है रिवोल्ट बढ़ने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या था, लाल किला था, जो मुगल एम्परर था वो वहाँ पे रहता था, जिसको वो अपना लीडर बनाना चाहते थे. उसके बाद फिर इन लोगों को लगा कि नहीं, दिल्ली पे हमें अपना कंट्रोल बेटर एस्टेब्लिश करने के लिए हमें दिल्ली पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है. तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या असर हुआ इस रिवोल्ट का दिल्ली पर. During the revolt of 1857, the revolutionaries captured the city of Delhi and persuaded the Mughal emperor Bahadur Shah to become the leader of the uprising. Delhi remained under the control of the revolutionaries for 4 months. When the British regained control over the city, they exiled Bahadur Shah and his family to Burma and embarked on a campaign of plunder. Palaces were razed to the ground, gardens closed, and barracks for troops built in their place. ठीक है, ये सारे काम फिर ब्रिटिशर्स ने करे. गार्डन्स को, मतलब किलों को बंद करके ये लोग बैरक्स बनाने लगे, गार्डन्स खत्म कर दिए गए. ठीक है, किलों को नष्ट कर दिया गया, वहां पे इन्होंने अपने सैनिक तैनात कर दिए. British wanted the people of Delhi to forget about their Mughal past. ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे Accordingly, कि जो लोग हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, वो अपने मुगल पास्ट को जो है पूरी तरीके से भूल जाए. मुगल का, क्योंकि वो लोग मुगल को अपने लीडर बनाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग दिल्ली को इस तरीके से चेंज कर रहे थे कि उनको याद ही ना रहे कि कोई मुगल एम्परर था जो यहाँ पे रूल करते थे, मुगल्स थे जो इनको रूल करते थे. वो चाहते थे कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को, हमें ही ये लोग याद रखें और हमें ही अपना जो है लीडर समझें, और मुगल्स को पूरी तरीके से भूल जाए. इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस तरीके का डिस्ट्रक्शन कर रहे थे. the area around the Red Fort was completely cleared of gardens and pavilions. ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल साफ कर दिया गया. No worship was allowed in the Jama Masjid for 5 years. In the 1870s, the British
decided to break the western walls of Shah Jahanabad so as to establish the railway and to allow the city to expand beyond the walls. The British now began living in the sprawling civil lines area that came up in North Delhi, away from the Indians in the walled city. The Delhi College was turned into a school and finally shut down in 1877. ठीक है, जो दिल्ली कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था उसको पहले तो स्कूल में कन्वर्ट किया जाता है और 1877 में उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है. A few decades after the revolt, the British finally made the decision to shift the capital of British India from Calcutta to Delhi. ठीक है, फिर फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें कैलकाटा से शिफ्ट करके अपनी कैपिटल जो है दिल्ली को बनाना चाहिए. Delhi. What prompted the British to make this decision? अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये लोग जो है बनाना चाहते थे दिल्ली को अपना कैपिटल, क्यों अपनी कैपिटल शिफ्ट करना चाहते थे कैलकाटा से दिल्ली, क्योंकि ये जो सारी घटनाएं हुई थी 1857 की, उसके बाद इन लोगों को दिल्ली की इम्पोर्टेंस का पता चल गया था. During the revolt, the British realized that the Mughal emperor was important to the people of India, who saw him as their leader. So accordingly, the British decided that Delhi, the city of the Mughal emperors, would be converted into their stronghold. Many spectacular events were held in Delhi. In 1877, Viceroy Lytton organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India. Another darbar was held in Delhi in 1903 to celebrate the coronation of King Edward VII and Queen Alexandria as the Emperor and Empress of India. ठीक है, तो दो दरबार इन्होंने लगाए. पहले तो जब इन्होंने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ जो है उनके शासन के अंडर अब इंडिया रहेगा. दूसरा, जब किंग एडवर्ड VII और क्वीन अलेक्जेंड्रिया उनको जब एम्परर और एम्प्रेस इंडिया का बनाया जाता है, तो फिर से एक ग्रैंड दरबार जो है दिल्ली में लगाया जाता है. और जो है मतलब क्या कर रहे थे ये लोग, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे अब दिल्ली जो है पूरी तरीके से मुगल कंट्रोल से बाहर है और अब हम जो है रूलर है इंडिया के और हम ही जो है दिल्ली को भी रूल करेंगे पूरी तरीके से. मतलब हमारा कॉम्पेंट शो इन लोगों ने यहाँ पे फिर दिखाया. In 1911, when King George V was crowned in England, a darbar was held in Delhi to celebrate the occasion. At this darbar, the British announced their decision to shift the capital of India from Calcutta to Delhi. यहाँ पे इसी दरबार में ये डिक्लेयर करते हैं कि अब हम अपनी कैपिटल को जो है शिफ्ट कर लेंगे कैलकाटा से दिल्ली में. As you know, Delhi had once been a stronghold of the revolutionaries. By celebrating British power and pomp in Delhi and then adopting it as their capital, the British were making a symbolic statement. They wanted the Indians to realize that the British now had control over India. However, there were also other more practical reasons that prompted the British to choose Delhi as their capital. Take a look at this infographic to view a few other reasons why the British chose Delhi as the new capital. After declaring that Delhi was the capital of India, the British went about planning the construction of the new capital. How did they do this? देखो क्या किया इन्होंने, जब इन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल घोषित कर दिया उसके बाद इन लोगों ने दोबारा से एक नई कैपिटल को जो है दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने का प्लान करा कि अब जो है हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का चेंज करना है और
जो है मुगल एम्परर का जो रूल था, वहाँ पे जो इम्पैक्ट था, उसको ख़त्म करके हमें एक नई कैपिटल यहाँ पे बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनको एक नए प्लान की ज़रूरत थी कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि ये नई बिल्डिंग्स या नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे शुरू कर सके। अब इसके लिए इन्होंने क्या करा, उसको अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का चेंज किया।